Very good morning to all the students of class 3rd. Dear student, today we will study the 11th chapter of social science, named as means of communication. Dear student, very first you should know what are the learning objectives of this chapter. Dear student, we will study this chapter from the book Our Land, Our World. So, dear student, let's begin with the chapter. So, dear student, very first, you should know what are the learning objectives of this chapter. Dear student, very first, you will learn about means of communication. Secondly, you will learn about individual communication. And thirdly, you will understand mass of communication. And at last, you will understand internet and email service. So, dear student, this is all about the learning objective of the chapter 11 named as mass means of communication. So, let's begin with the chapter. Dear student, here I am sharing my screen with you, which will help you to understand the chapter. So, dear student, we like to keep in touch with our friends and relatives living in other villages, cities and countries. But it is not always possible to visit them. So, we send and receive messages. Means used for sending or news to individual or masses are called means of communication. So, this is very important question. What is the means of communication? So, the answer is means used for sending messages or news to individual or masses are called means of communication. So, dear student, as this is just that you should know how we get news. We got news in our olden days. In olden days, pigeons and messengers were used to send and receive letters. पुराने दिनों में हम किस चीज का यूज करते थे? कबूतरों का और मैसेंजर्स का यूज करते थे अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए. So, let's discuss the first learning objective, that is individual communication. As you can see in my screen, individual communication. Dear student, this is very important question. What is the individual communication? And I am highlighting it. So, what is individual communication? That communication of message to an individual is called individual communication. जिसे आप उसी व्यक्ति तक मैसेज पहुंचे जिस व्यक्ति को आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. That is called individual communication. So, we can send our message to our relatives, friend and business friend by a letter, by a mail, email, telephone, cellular phone or fax. So, letters are of 3 types: postcard, inland letters and stamped envelopes. So, this is the pictorial part of postcard. This is the pictorial part of inland letters. These are the stamped envelope. So, dear student, as I am removing it, so these are the individual
communication tools. Dear student, we must write the name and complete address on the letter in a clear handwriting. हम क्या करते हैं, अपने लेटर में क्लियर हैंडराइटिंग से उसका एड्रेस लिखते हैं जहां हमें ये लेटर पहुंचाना है. We must write the pin code also. So, dear student, अगर आप उस एरिया का पिन कोड लिखेंगे तो पोस्टमैन के लिए बहुत इजी हो जाता है आपके लेटर को उस तक पहुंचाने के लिए जिस तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. So, this is the example of complete address. First, you have to write your name. Secondly, you have to write your street or road. Thirdly, you have to write your colony name. Fourthly, you have to write your city name. And lastly, you have to write your state and pin code. ये complete address लिख के आप इसको letter box में डाल देते हैं. After writing, so letters are sent to other places by buses, train and aeroplanes. किसकी हेल्प से पहुंचाए जाते हैं letters? Letters are sent to other places by buses, train and aeroplanes. Dear student, we write to our friends and relatives. We get letter from them. It is fun to write and get letter. The postman bring us letters. So, dear student, again this is very important question. Who brings us letters? So, dear student, the answer is the postman brings us letters. Letters take 2 or 3 days to reach the address. कितने दिन लगते हैं किसी भी लेटर को पहुंचने में? 2 से 3 दिन लगते हैं. For far places, it is take more time. जो दूर की जगह होती है वहां पर इससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं. Urgent letters can be sent through speed post or by a courier mail. So, this is again very important question. How we can be send urgent letters? How we send urgent letters? So, the answer is we can send urgent letters through speed post and through courier mail. To send and receive the messages immediately, we talk on telephone to the concerned person. तो अगर आपको immediate किसी को मैसेज देना होता है तो कौन सा मोड यूज करते हैं आप? टेलीफोन का. उस इंडिविजुअल को आप क्या करते हैं? फोन करते हैं और उस तक मैसेज पहुंचाते हैं. So this is the pictorial part of speed post. This is the pictorial part of talking on a telephone. This is the pictorial part of fax. This is the pictorial part of cellular phone. Through a fax, you can send a written message as such photocopied to other place. Fax से आप कैसे मैसेज पहुंचाते हैं? Written message आप जिसको भेजना होता है उस तक पहुंचाते हैं जैसे आपको फोटोकॉपी पेपर मिलता है. It photocopy reaches in a few seconds. और कुछ ही समय में ये आपकी कुछ ही सेकेंड्स में उस तक पहुंच जाती है जिसको आपने पहुंचाना होता है. Telephones are connected by wires to distant places. Nowadays, wireless cellular phones are used to talk. So, dear student, वायर्स के थ्रू टेलीफोन कनेक्ट लेते हैं लेकिन आजकल जो फोन बिना वायर्स के यूज किए जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं? वायरलेस सेल्युलर फोन्स कहते हैं जिसमें हम बातें करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, इन द जिस्ट ऑफ टॉपिक, व्हाट आर द इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मोड्स? सो दीज आर लेटर्स, फोन्स, फैक्स and cellular phones. These are example of individual communication. So, dear student, let's discuss the next learning objective, that is
Mass communication. Dear student, communication of a message or news to masses is called mass communication. This is very important question and I am highlighting it. Communication of a message or news to masses is called mass communication. किसके थ्रू होता है? किसी बंदे से के किसी आदमी के से वो सब तक जो न्यूज पहुंचती है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट. मैसेजेस, आई एम हाइलाइटिंग इट. मैसेजेस, news or information can be delivered to many person at the same time through a newspaper. एक ही टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को कैसे मिलती है न्यूज? न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है. The news reaches the people in all part of the country in just one day. एक ही दिन में कंट्री के डिफरेंट पार्ट में आपको न्यूज मिलती है. किसकी हेल्प से न्यूज मिलती है? न्यूज़पेपर की हेल्प से न्यूज मिलती है. Any news broadcast through a radio or television reaches the people immediately. कैसे मिलती है? रेडियो और टेलीविजन के थ्रू कैसे मिलती है न्यूज? ब्रॉडकास्ट होती है न्यूज और आपको जल्दी से जल्दी वो न्यूज मालूम पड़ती है. On a radio we hear only voice. तो रेडियो में सिर्फ आपको आवाज सुनाई देती है और टेलीविजन में क्या होता है? We hear the news and see the live event on the screen. What is the difference between radio news and television news? रेडियो में हम क्या होता है? सिर्फ आवाज सुनते हैं और टेलीविजन में हम लाइव इवेंट को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. Television has now become a very popular means of communication. तो टेलीविजन क्या है? सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द वेरी पॉपुलर which is the very popular means of communication? So television is a very popular means of communication and recreation. We hear and watch a variety of programs of music, dance, drama, news, sports and business on television. The programs are telecast through a satellite all over the world at the same time. तो programs किसके थ्रू आते हैं? टेलीकास्ट होते हैं, सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट होते हैं. This is very important question and I am highlighting it. How programs are telecast all over the world. So this is the pictorial part. And this is the process. So the answer is the programs are telecast through satellite all over the world at the same time. Satellite के through एक ही time पर पूरी दुनिया में क्या होता है? प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं. देखिए जैसे ये मैच चल रहा है, ये सैटेलाइट के पास गया, रिकॉर्ड करके सैटेलाइट के पास गया, रिसीवर ने उसे रिसीव किया, उसके बाद रिसीवर ने जैसे ही रिसीव किया और वो आपको टेलीविजन पे दिखा. मैच हो रहा है, मैच में 600 फॉर सचिन तेंदुलकर ये दिखा एंड यहाँ टीवी में दिखा इंडिया वॉन द मैच एट द सेम टाइम, उसी समय. So this is all about the second learning objective. As I am removing it, which is mass communication. So what are the example of mass communication? Radio, television and newspaper. These are the example of mass communication. The next one is internet and email. Yes, student, as you can see in my screen, computer and internet have made communication much faster and efficient. So this is very important question. Which is the best
process of communication or which is the faster communication system? So the answer is computer and internet are faster, efficient communication systems. If you have a computer, you can log on to internet and send emails, that is called electronic mails, instantly. उसी समय आप अपनी email ID से किसी को भी मैसेज दे सकते हैं. You can get information about anything you want to know through internet in a short time. और आपको किसी की भी जानकारी लेनी हो तो आपको इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में वो न्यूज, वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है. All these latest means of communication have brought the world closer and help to connect people better. तो ये सारे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसने पूरी दुनिया को एक साथ क्लोज ले आए हैं और पूरी दुनिया को एक साथ बेटरली कनेक्ट किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 11 means. This is all about means of communication. So dear student, we will study next chapter, that is 12th chapter in our next class. Thank you.